दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जगत में पहले से ही चर्चा थी कि भारत पाक युद्ध में फ्रांसीसी लड़ाकू जहाज राफेल का प्रदर्शन कैसा रहा। Indonesia itself signed a contract to purchase 42 Rafale units in February 2022 with a value of around $8.1 billion US. The fall of Rafale in real combat clearly raises concerns in Indonesia. With a very large contract value, the public has the right to know whether this investment is right or not. ये 10C से राफेल की तुलना की गई थी और कहा गया था कि चीनी विमान ज्यादा कामयाब रहा। दावा किया गया था कि उसने ही चीनी मिसाइल PL-15 के जरिए राफेल को गिराया था। यहाँ तक कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसा के शेयर गिर गए थे और J-10C बनाने वाली कंपनी के शेयर एकदम से चढ़ गए थे। $8.1 billion deal to acquire 42 Rafale fighter jets from France has come under intense scrutiny following controversial reports about the aircraft's performance in recent military engagements. Now faces uncertainty, fueled by allegations that Rafales were shot down during clashes involving Indian and Pakistani forces. पड़ोसी हमारे न जाने जंग पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे या फ्रांस, रशिया और इजराइल के साथ, क्योंकि फ्रांस के तो लग गए हैं। अब क्या लग गए हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इस वक्त फ्रांस की रफाइल वाली डीलें बाकायदा तौर पर सस्पेंड होना शुरू हो चुकी हैं। ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, यूरोपियन अखबार का आर्टिकल है, वो लिखता है रफाइल फाइनेस्ट आर हैज पास्ट, यानी चंगे वक्त गुजर गए। इंडोनेशिया सस्पेंड परचेज ऑफ फ्रेंच फाइटर जेट्स। $8.1 बिलियन की 3 साल पहले की डील थी और फाइनल जब होने लगी तो इससे पहले पाकिस्तानियों ने रफाइल का बेड़ा गर्क कर दिया और किसके हाथों? भारतीयों के हाथों बेड़ा गर्क हुआ और अब इंडोनेशिया ने $8.1 अरब की रफाइल की डील को खत्म करने का बाकायदा फैसला कर लिया। अब ये नीचे पढ़े लिखा हुआ है, इंडोनेशिया प्राइसी $8.1 बिलियन फॉर 42 रफाइल फाइटर फ्रॉम फ्रांस हैज बीन थ्रोन इनटू सीरियस डाउट आफ्टर द जेट्स disastrous debut in a recent fighting between India and Pakistan. The purchase of the aircraft has been suspended. पाकिस्तान का अखबार नहीं है, यूरोप का अखबार है। आप दूसरा देखें, द एशिया लाइव, वो लिखता है Indonesia's Rafale fighter jet deal, French Rafale fighter jets under scrutiny as Indonesia paused on $1 billion purchase over combat performance doubts. Combat performance doubt कहाँ पे हुए? इंडिया के साथ, यानी इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी है उसने पट्टा किसका बिठा दिया है? फ्रांस बेचारे का, कि जिसने गलती से भारत के साथ डील कर दी है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, भारत ने 63,000 करोड़ भारतीय रुपए ऑलरेडी 29 जहाजों के पे कर दिए हैं जो उसने अपनी नेवी के लिए लेने थे। यानी वही जहाज तुम लेते रहो, दुनिया तो इससे पीछे हट रही है। इस तरह एक और है, टॉप वर न्यूज है, वो भी सेम वही हेडलाइन, राफेल फाइनेस्ट आवर हैज पास, यानी उसके अच्छे वक्त गुजर चुके हैं। इंडोनेशिया सस्पेंड परचेज ऑफ फ्रेंच फाइटर जेट्स। अब ये तो रहा फ्रांस। अब जब S-400 की बात आएगी, पहले ही उस पर इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से, अब वो तो कोई खरीदार है नहीं, लेकिन जल्द ही वो भी न्यूज इंशाल्लाह आप जरूर सुनेंगे कि S-400 का बेड़ा भी तरने वाला है, गर्क होने वाला है। क्योंकि जो 2 चीजें तबाह हुई हैं वो ये मेन 2 चीजें थी, जिनमें राफेल तो भारतीय अभी भी नहीं मान रहे, आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बाकायदा क्वेश्चन पूछ लिया और ये ट्वीट आपके सामने जब चल रही है जिसमें एस जयशंकर से वो सवाल पूछ रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ये तो बताओ कि कितने जहाज हमारे नुकसान पहुंचा है या गिरे हैं। अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है सारे मामले पर। अब दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जगत में पहले से ही चर्चा थी कि भारत पाक युद्ध में फ्रांसीसी लड़ाकू जहाज राफेल का प्रदर्शन कैसा रहा। 1 या 2 राफेल विमानों के गिरने की अपुष्ट खबरों ने इस चर्चा को बल दिया था। पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमान J-10C से राफेल की तुलना की गई थी और कहा गया था कि चीनी विमान ज्यादा कामयाब रहा। दावा किया गया था कि उसने ही चीनी मिसाइल PL-15 के जरिए राफेल को गिराया था। यहाँ तक कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसा के शेयर गिर गए थे और J-10C बनाने वाली कंपनी के शेयर एकदम से चढ़ गए थे। कहा जाने लगा है कि चीन ने अपने हथियारों का परीक्षण इस युद्ध के दौरान कर लिया और अब वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग बढ़ जाएगी। बहरहाल, अब फ्रांसीसी मीडिया ने भी राफेल की क्षमताओं और उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्रांस 24 का कहना है कि भारत पाक जंग में चीन के लड़ाकू जहाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। एक फ्रांसीसी चैनल द्वारा फ्रांसीसी लड़ाकू जहाज को कमजोर बताया जाना हैरत में डालता है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तो यही कि पश्चिमी देश भारत को चीन से डरा रहे हैं ताकि वो उनके पाले में आ जाए। जी, इसमें सबसे पहले पाकिस्तानी और चाइनीज ऑफिशियल मीडिया ने ये क्लेम किया कि J-10C फाइटर जिसके साथ PL-15 मिसाइल हैं, उन्होंने जो है 3 राफेल जेट्स को गिराया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। Indonesia itself signed a contract to purchase 42 Rafale units in February 2022 with a value of around $8.1 billion.
This jet is planned to replace the aging E-5 Tiger fleet. The fall of Rafale in real combat clearly raises concerns in Indonesia. First, from a technical perspective, is this jet superior enough to face the latest generation of missiles such as the PEL-15? Second, from the political and public opinion side. With a very large contract value, the public has the right to know whether this investment is right or not. Third, from the long-term strategy side, does Indonesia need to change the doctrine of using fighter jets? Or prepare a stronger support system? Let's dissect one by one. 1. Re-evaluate the effectiveness of Rafale. Indonesia needs to ensure that the Rafale we buy has the best self-protection system. Radar, jamming system, chef, and flare must all be upgraded. Don't forget, the enemy is also constantly evolving. 2. Opportunity for renegotiation. This incident gives us a strong reason to renegotiate the specifications. The government can request additional technology, special training for pilots, and even long-term logistical support. 3. Technological independence. This is the time to strengthen the role of domestic industries such as PT Dirgantara, Indonesia. Technology transfer must be a priority. 4. Integration of the Rafale roll system must be able to work with local radars, NASAMS missile systems, F-16 aircraft, and even drones. Without integration, combat power is not optimal. 5. Not just a platform, but a system. We must think in one defense ecosystem. Advanced jets without training, engineering, and logistics will be easily defeated. The Great Rafale will be meaningless if our human resources are not ready. So pilot and technician training must be the main focus before the unit arrives. In addition, the Indonesian Air Force must develop a new combat doctrine that suits the characteristics of the Rafale. Our air strategy must be proactive, not just defensive. What are the lessons from India? First, don't be too confident. The Rafale is indeed superior, but if it is not supported by a comprehensive defense system and smart tactics, the results can be fatal. Second, the importance of situational awareness. Technology cannot replace the role of humans in making decisions in the air. Third, the importance of a solid air defense network, early detection, and interoperability are the determinants of victory. The Rafale is still a modern fighter jet that has many advantages. Indonesia's ambitious $8.1 billion deal to acquire 42 Rafale fighter jets from France has come under intense scrutiny following controversial reports about the aircraft's performance in recent military engagements. The deal, initially celebrated as a game-changer for Indonesia's defense modernization, now faces uncertainty, fueled by allegations that Rafales were shot down during clashes involving Indian and Pakistani forces. This development has sparked serious debates among Jakarta's defense circles. At the heart of the controversy are claims, supported by alleged footage, that Rafales were downed by long-range PL-15E missiles launched from Pakistan's Chinese-made J-10C jets.